What is it? I don't know. I will understand English or who does not understand English? Huh? Translation? May come after. No, Hindi listeners, they may come afterwards. Oh. You can translate. Point to points. Strong. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasacha Desatharine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Very auspicious day today. It's also Dashera, Vijayadashmi, and also appearance day of Srila Madhavacharya. Yesterday I've spoken already about Dasera, so today we're going to speak on Madhavacharya. As you know, there are four sampradayas. Brahma, Gaudiya, Madhva Sampradaya. Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Sri Sampradaya. And then? Kumara Sampradaya. Rudra Sampradaya. Yeah, Sri Sampradaya and Rudra Sampradaya. So, our disciplic succession come from the line of Madhavacharya. That's why it's called Brahma, Gaudiya, Madhva, Vaishnava, Sampradaya. So Madhavacharya was a very, very exalted, staunch preacher. He had been having many names. Ananta Tirtha. His first name was Ananta Tirtha. His name was also Vasudeva. Purna Pragya. And then, most famous, then he became the Madhavacharya. He was a very powerful intellectual. So, in fact, he is an incarnation of Vayu. Vayu.
Hanuman also, Vayudeva. हनुमान जी भी वायुदेव थे. And he was initiated at the age of 5. तो 5 साल में उनकी दीक्षा संस्कार हुआ था उनका. And he took sannyas at the age of 12. और 12 साल के जब वे थे उस समय उन्होंने संन्यास ले लिया. He was having the desire to leave home, take sannyas and go away. तो उनकी पहले से इच्छा थी कि वो संन्यास लेकर वो घर छोड़कर विरक्त हो जाए. And his parents were worried about him. लेकिन उनके जो माता पिता थे वो बड़े चिंतित थे इनके बारे में. And at the age of 12 he left and went away. In fact, before going away to take sannyas, he was asking the blessing of his parents. तो वे जब 12 साल के थे वे संन्यास लेकर घर छोड़कर चले गए. लेकिन जब वे घर छोड़कर जा रहे थे तो वे अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने गए. And parents did not want to give. लेकिन वे कोई आशीर्वाद देने की इच्छा में नहीं थे उनके माता पिता. They don't want him to go. क्योंकि वे चाहते नहीं थे कि उनका पुत्र चला जाए उनसे दूर. So no, stay here. You cannot go. तो उनकी इच्छा थी कि आप जा नहीं सकते हो हमसे दूर. And Madhavacharya told his parents, Mother and Father, please give me a blessing. I want to go and take sannyas. लेकिन वो कहे कि ये मेरे माता पिता कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए क्योंकि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ. If you give me a blessing, I'll take sannyas. I can come and visit you also. तो अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे मैं संन्यास लूँगा और फिर उसके बाद मैं आपको बीच-बीच में मिलता भी रहूँगा. But if you don't give me blessing, I will go anywhere. I'll take sannyas, but you will never see me. लेकिन अगर आप आशीर्वाद नहीं देते हैं फिर भी मैं संन्यास लूँगा लेकिन उसके बाद कभी मैं आपको मिलने के लिए नहीं आऊँगा. So you choose. तो आप इन दोनों में से कोई भी पसंद कर सकते हैं. Amazing, right? Decision has been made. You will go for sannyas. But if you give, I will come and visit you one day. If you don't give, forget about it. You will never see me. व्यक्तिगत रूप से उन्होंने संन्यास लेना तो पहले ही निर्धारित कर लिया था. लेकिन अगर वो उनके माता पिता अगर उनको आशीर्वाद देते हैं तो वो उनको मिलने आने वाले थे. अगर नहीं देते आशीर्वाद तो कभी उनको संन्यास के बाद कभी मिलने वाले नहीं थे. He was also very, very powerful, like Vayudeva. तो वे बल में भी बड़े मतलब बहुत शक्तिशाली थे क्योंकि वे वायुदेव के अवतार. Built up body. सशक्त ऐसा शरीर था उनका. And he would do many, many, many miraculous activities. और कई सारे वो चमत्कार भी दिखाया उन्होंने. If he's playing somewhere by the riverside, and if his mother's calling, immediately, when mother's calling, Anantirtha immediately just jump. तो नदी के किनारे खेलते थे वे और जब उनकी माताओं को बुलाती थी तो तुरंत ही वो वहाँ पर प्रकट हो जाते थे. He would also fight with snakes and lions. तो सिंह या फिर सांपों के साथ भी वो जंगल में उनके साथ भी खेलते थे, युद्ध करते थे. They were very, very powerful. बहुत शक्तिशाली थे. But then she went and took sannyas. लेकिन उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया. So Madhavacharya, he from his base was in Udupi, right? तो वे उडुपी क्षेत्र से थे. His base is Mata. Matsi is made 8 mat to take care of the temple. तो 8 मठों के द्वारा मंदिर का संभाल किया जाता था. Each mata will take care 2 years of हर the एक मठ 2-2 साल तक मंदिर की देखभाल करते थे, सेवा करते थे. And Madhavacharya propounding, because at that time there were also many philosophy of impersonalism, and he would go and elaborately he would go and defeat this crossing down this philosophy, Maharaj. तो मध्वाचार्य ये
प्रचार के लिए भी जाते थे, क्योंकि मठों को तो उन्होंने मंदिर की सेवा की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि उस समय मायावाद जो दर्शन है उसका भी बहुत गलत प्रचार हो रहा था, तो उसको परास्त करने के लिए भी प्रचार के लिए जाते थे और मायावाद को खंडन करते थे। And his philosophy was Dvaita. और उन्होंने द्वैतावाद का जो दर्शन है उसको प्रस्तुत किया। Buddhists say Sunya, zero. जो बुद्ध की फिलॉसफी है, दर्शन है, वो कहता है कि सब कुछ शून्य है। Shankaracharya said one. शंकराचार्य कहते हैं सब कुछ एक है। Everything is one. But Madhavacharya said no. It is two. एक नहीं दो है। And Chaitanya Mahaprabhu? One and two and many. चैतन्य महाप्रभु ने एक भी है, दो भी है और कई है, ऐसे इस प्रकार सिद्धांत स्थापित। One time there was a Mayavadi sannyasi who came to the parikrama, Brajamandal parikrama. तो एक बार एक मायावादी सन्यासी थे, वे ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए आए थे। So then he was sleeping at night. He asked the devotees, "Give me a blanket." तो जब वे सो रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने भक्तों को पूछा कि आप मुझे कृपया ब्लैंकेट दीजिए। So one devotee wanted to tease him a little bit. तो एक जो भक्त थे, वो थोड़े चिढ़ाना चाहते थे। So he took the blanket and he picked up one small thread from the blanket, thread, and he went and gave it to him. तो जब वो मायावादी सन्यासी के पास हमारे जो भक्त थे, उन्होंने ब्लैंकेट से एक धागा निकाला ब्लैंकेट का, और वो धागा उनको दे दिया। And Mayavadi sannyasi said, "What are you doing? I'm asking you for blanket. You're giving me this thread." तो वे कह रहे मुझे तो ब्लैंकेट चाहिए, आप मुझे धागा दे रहे हो ब्लैंकेट का। And the devotee said, "Yeah, but that's your philosophy. Everything is one." हाँ सही है, क्योंकि यही आपका दर्शन है, यही आपका तत्व ज्ञान है। Dhaga and blanket is one. क्योंकि आपके हिसाब से जो धागा है पूरा ब्लैंकेट है, वो एक ही है। Another time when Bhaktisiddhanta Maharaj was traveling in the train, he was having one box of mango fruits. तो एक बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ट्रेन में वो सफर कर रहे थे, तो उनके पास एक पूरा आम से भरा हुआ एक पूरा बॉक्स था। So, and there was this Mayavadi sannyasi sitting in the same compartment there. तो उसी कंपार्टमेंट में उनके आगे एक मायावादी सन्यासी भी उपस्थित थे। But some of the mango were good, some were not good. Some were a little kind of almost rotten. तो उसमें से कुछ आम अच्छे थे और कुछ सड़े हुए थे। So Bhaktisiddhanta would take the rotten one and he would give it to the sannyasi Mayavadi. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने जो सड़े हुए आम थे, वो उस मायावादी सन्यासी को दिए। And he would do that few times. और ऐसा कई बार किया उन्होंने। And Mayavadi said, "Why are you giving me the rotten one?" तो वे कहे कि आप मुझे सड़े हुए आम क्यों दे रहे हो? Bhaktisiddhanta Maharaj, "Yes, that's your philosophy. Everything is one." तो वही आपका तत्व ज्ञान है, वही आपका दर्शन है कि सब कुछ एक है, इसलिए मैं आपको सड़े हुए आम दे रहा हूँ। So, according to Chaitanya Mahaprabhu, Achintya Veda Tattva. That's the best philosophy. तो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान ये है अचिंत्य भेदा अभेद तत्व। It is one and different. तो ये जो तत्व ज्ञान है, सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु का, ये एक और कई सारे दिखाता है सिद्धांत। Like the soul is one with God, but is also different. तो उदाहरण के तौर पर आत्मा ये भगवान के साथ एक भी है और अलग भी है। Right? It's like dahi is one with milk, but it's also different. दही ये दूध के साथ दूध के जैसा भी है और दूध से अलग भी है। एक प्रकार से दूध भी और दूध से अलग भी। If we say the family
members of the family, they were fighting before. If we say the members of the family, they were fighting before, now they have become one. तो आप कह सकते हैं कि कोई परिवार के सदस्य पहले झगड़ रहे थे, लेकिन अभी वे एक बन चुके हैं. What does that mean? इसका अर्थ क्या होता है? The members, they were fighting before, and now they have become one. परिवार के सदस्य पहले झगड़ा कर रहे थे, लेकिन अभी वे एक बन चुके हैं. इसका अर्थ क्या होता है? It doesn't mean that 10 members have become one, no. They have become one means they have become now, yes. तो इसका अर्थ ये नहीं है Together. कि 10 परिवार के सदस्य एक बन गए. इसका अर्थ है कि वे विचारों से एक बन चुके हैं. If we say there are many cows, 100 of cows, and now they have merged into the cow shed, they have gone into the cow shed. So merged in the cow shed doesn't mean that they have become one. They still keep their individuality. They still remain 100 cows in the cow shed. तो अगर कोई कहता है कि सैकड़ों गाय हैं और वो सैकड़ों गाय अभी गौशाला में चली गई हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि गायों ने अपना अस्तित्व खो दिया है. इसका अर्थ ये है कि गौशाला भी है और गाय भी है. दोनों का व्यक्तिगत जो स्वरूप है वो अभी भी बना हुआ है. There are many verses that defeated in the Mahabharati philosophy in Bhagavad Gita itself. तो भगवद गीता में भी मायावाद दर्शन को परास्त करने के कई सारे श्लोक हैं. Tam name janati paha na chavalam bhavishamaha sarvaya adhaparam. There was never a time when I did not exist, you and all the king, knowing the future, shall cease to exist. ऐसा कभी समय नहीं था कि मैं नहीं था, आप नहीं थे और ये सब राजा नहीं थे, और ना ही ऐसा कभी समय आएगा कि आप सभी नहीं रहेंगे या मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहेंगे. तो ये भगवद गीता का श्लोक बता है. So that defeat Mayavads, right? तो ये भी मायावाद को परास्त करता है. Mamaivamsa jiva loke, jiva bhuta sanatana. We are eternally fragment parts of Krishna. There's no question of merging. So we are eternally fragmental parts. तो मम एव वंशम, तो इस श्लोक के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो मेरा नित्य अंश है, वो कभी मेरे साथ एकाकार नहीं होता है. But the Mayavadis give the philosophy. If you take a drops of sea water, you put it in the ocean, it becomes one. लेकिन मायावादी जो तत्वज्ञानी होते हैं वो उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर आप समुद्र की बूंदें लेंगे और उनको अगर आप समुद्र में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट और पूरा सब कुछ एक हो जाएगा पानी. But Prabhupada's point is, yeah, we can take the example of the ocean, but it's like the fish. It's merged, the fish, the sharks and the crabs and oysters, they merge in the ocean, yes, but they're keeping their individuality. तो इस प्रकार हालांकि ये जो उदाहरण है समुद्र और समुद्र के बूंद का, ये तो मायावादी देते, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि समुद्र में कई सारी मछलियां होती हैं, शार्क होते हैं, लेकिन वो हालांकि समुद्र में रहती हैं, समुद्र में रहकर भी वो अपना जो व्यक्तिगत स्वरूप है वो बनाए रखते हैं. But that kind of philosophy is rejected by the Vaishnavas. तो वैष्णव द्वारा इस प्रकार के मायावाद तत्व ज्ञान को खंडित किया गया है. Jiva is godly, but not God. Godly is different, but Jiva is not God. तो वैष्णव तत्व ज्ञान के अनुसार जो जीव है वो भगवतमय जरूर है, लेकिन वो भगवान नहीं है. If we say we can become God, this Mayavad philosophy. If they say we can become God, it means now they are not God. So not God cannot become God. तो मायावादी कहते हैं कि अभी हम भगवान नहीं हैं, लेकिन बाद में भगवान बन सकते हैं. तो अगर कोई आज भगवान नहीं है तो बाद में भी भगवान नहीं बन सकता है. Huh? Now God is in Maya. उनके अनुसार अभी हम मतलब भगवान माया में हैं. So cannot, if God is in Maya, so then Maya is stronger than God. तो अगर हम मतलब
उनके अनुसार हम भगवान हैं, और अगर अभी हम माया में हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि माया भगवान से ज्यादा शक्तिशाली हो गई। If one think like that can become God, this is the last snare of omniscience, of ignorance. तो अगर हम समझते हैं कि हम भगवान हैं, ये माया का सबसे बड़ा हमला है हमारे ऊपर। कोन भाग्यवान जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर nitya das. This is a swarup of the soul that is an eternal servant of Krishna. जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। आत्मा ये भगवान कृष्ण का नित्य दास है, सेवक है। This is why Prabhupada is pranam mantra is Namaste Saraswate Deve, disciple of Bhaktisiddhanta, Gauravani Pracharine, going to spread message of Mahaprabhu, Nirvisesa Sunyavadi Paschatya, in the Western world, to preach, to deliver. Tarine, those Mayavadis and impersonalists. तो श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में भी आता है कि नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, तो निर्विशेष शून्यवादी पाषाण देशधारिणे। तो श्रील प्रभुपाद ये निर्विशेषवादी शून्यवादी मायावादियों को तारने के लिए, उनको परास्त करने के लिए आए हैं। So so Madhavacharya, he came very powerfully, he was also preaching. तो अत्यंत शक्तिशाली रूप से मध्वाचार्य प्रचार कर रहे थे। And he actually went to meet, he went to Himalaya to meet Vyasadeva. तो हिमालय में श्रील मध्वाचार्य श्रील व्यासदेव को मिलने के लिए भी गए थे। But here there is a point. Vyasadeva was on this planet 5,000 years ago. लेकिन यहाँ पर एक प्रमुख मुद्दा यह आता है कि व्यासदेव ये 5000 साल पहले इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। But Madhavacharya was just 700 years ago, right? लेकिन श्रील मध्वाचार्य 700 साल पहले आए थे। So there is a big gap. यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर बन रहा है समय का। In the parampara, first is Krishna, then Brahma, and then Narada, and then Vyasadeva, and then Madhva. But Madhva was just 700 years ago. तो यहाँ पर समय के अनुसार अगर हम देखें तो काफी बड़ा अंतर पड़ रहा है। तो श्रील व्यासदेव 5000 साल पहले प्रकट हुए और श्रील मध्वाचार्य को 700 साल पहले आए थे। What is this gap then? तो ये अंतर कैसे समझ सकते हैं? Anybody? Shiksha Sampradaya. Huh? We have, this is our discipleship is our Shiksha Sampradaya, not Diksha Sampradaya. Yeah. Even Shiksha. We have to have Shiksha from the Shiksha Guru, right? I'm saying it. Madhavacharya was 700 years ago, but Vyasadeva came 5,000. Yes, he went there and met him. So Madhavacharya, he went to the Himalaya because Vyasadeva is still there, was there. हालांकि 5000 साल पहले प्रकट रूप से व्यासदेव थे, लेकिन अभी भी वे शाश्वत रूप से वहाँ पर वास करते हैं, तो इसलिए मध्वाचार्य उनका दर्शन कर पाए व्यासदेव। He went with his disciple to the foot of Himalaya, but then he told them to stay there down. They could not go with him to the Himalaya. And he just went shoop, like the wind, because he is wind god, right? Incarnation. And he went there, and then he was blessed by Vyasadeva. And then he came back down. तो हिमालय के तलहटी तक श्रील मध्वाचार्य और उनके शिष्य वहाँ तक गए थे, लेकिन उनके शिष्यों को उन्होंने कहा कि आप ऊपर नहीं आ सकते हिमालय, आप यही रहिए। तो वहाँ पर क्योंकि वायु देव के अवतार थे, वो स्वयं वायु देवी थे,
तो उन्होंने छलांग लगाकर हिमालय की चोटी पर गए और वहां पर उन्होंने व्यासदेव को मिलकर उन्होंने व्यासदेव जी का आशीर्वाद दिया. He got the blessing of Vyasdev for his commentary. He wanted to write commentary on the different books, and Vyasdev gave him also a Astamurti, Shila, Salagram Shila. तो क्योंकि वे अलग अलग पुस्तकों के ऊपर अपना तात्पर्य लिखना चाहते थे श्रील मध्वाचार्य, तो इसलिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा और फिर श्रील व्यासदेव ने उनको अष्टमूर्ति शालिग्राम को भी भेंट स्वरूप में दिया. On his way back, because that's north, but he lives in south, right? So on the way there were many gundas. In the night they would attack people. He was going with his disciple, but there were gundas, they were coming to attack them. तो क्योंकि ये उत्तर भारत का प्रदेश था और वे दक्षिण भारत में जाना चाहते थे, तो इस बीच इस सफर में उनको रास्ते में कई सारे गुंडे डाकू लोग भी मिले और जब तब ये अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे. So the gunda were coming, and Madhavacharya, he took some cloth and he just threw it away, and that was becoming like gold, and the gundas were thinking this is gold, and they all went to catch the gold, and then they were able to move forward. तो जब ये गुंडे उनके मार्ग में जब आए तो उन्होंने बस एक कपड़ा लिया और उन्होंने उस कपड़े को एक दिशा में फेंक दिया और ऐसा दिख रहा था कि वो जो कपड़ा है, कपड़े का टुकड़ा, वो सोने के रूप में परिवर्तित हो गया, स्वर्ण के रूप में. तो उनको लगा कि ये सोना है, तो वो उसको देखने के लिए दूसरी दिशा में चले गए और फिर मध्वाचार्य के शिष्यों के रास्ते पर आगे चलने लगे. And one time there was a king who was stopped Madhavacharya's disciple to go down south. The king said, you have to work, you have to help digging a big lake. तो उसके बाद वहाँ के जो राजा थे, उस राजा ने श्रील मध्वाचार्य उनके शिष्यों को भी वहाँ पर अड़ा दिया और कहे कि अगर आपको आगे जाना है तो पहले हमें यहाँ पर एक तालाब खोदना है, उस तालाब को खोदने के लिए आपको हमें मदद करनी पड़ेगी. So this king would exploit people to work. He would not pay them, he would just exploit the people. जो राजा था लोगों का शोषण करता था और लोगों से काम करवा कर उनको कोई उसका मुआवजा नहीं देता था, धन नहीं देता था, फुकट में काम करवा. And Madhavacharya was intelligent. तो मध्वाचार्य का बहुत बुद्धिमान. He asked the king, okay, we can do it, but you have to show me how to do it. तो मध्वाचार्य काफी बुद्धिमान थे, वे कहेंगे हम कर सकते हैं लेकिन पहले आपको दिखाना पड़ेगा कैसे करेंगे. And the king just took his, what do you call it? Hull, yeah, for digging. He was showing, but then he himself was getting absorbed in doing it. He was not bothering about others, he was just got into doing it. And then Madhavacharya left. तो फिर जब राजा ने हाथ में जो कुराट ले ली और उससे वो खोदने लगा जमीन, तो करते करते वो गुम हो गया, उसको पता ही नहीं चला क्या हो गया. तो उसने समय में मध्वाचार्य उनके शिष्य आगे चले गए. So, yeah, he was doing many miraculous activities also, very powerful. तो वे इस प्रकार कई सारे ऐसे वो चमत्कार करते थे. So how this Murti, Gopal, right, in Udupi, he's the one who installed the deity there, Udupi, Gopal. तो श्रील मध्वाचार्य ने उडुपी में गोपाल भगवान की मूर्ति की स्थापना की थी. So it's explained how did he get this Murti. He was doing his walking around the seaside there, he was chanting his mantras, and then he saw one big ship coming, and the ship was stuck in the ocean. He just took his chadar and he waved at the ship, and the ship became free. First it was got stuck. Huh? Before showing the cloth, what happened? The ship got stuck. तो जब एक बार एक उडुपी के जो गोपाल जो कृष्ण है वो कैसे प्रकट हुए उसकी लीला बता रहे हैं. तो जब वे एक बार समुद्र के किनारे जप कर रहे थे सुबह श्रील मध्वाचार्य, तब वे देखे कि समुद्र में एक बहुत बड़ी नाव है और वो नाव समुद्र में फंस गई है.
तो उन्होंने अपनी चादर निकाली, उसको एक बार ऐसे लहराया, तो उससे क्या हो गया, वो जो नाव थी वो मतलब चलने लगी. And then the captain came out, or the captain of that ship came out, and he was pleased with Madhavacharya. He said, "We want to give you wealth, we want to give you whatever you want, please tell me." तो जो नौका के जो कैप्टन थे वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि नाव पहले फंसी थी, इनके वजह से नाव चलने लगी. तो बाद में उनसे मिले, बोले कि आपकी वजह से ये नाव चल रही है, तो आप बता सकते हैं, आप जो भी मांगेंगे, आपको जो भी धन मांगेंगे आपको दे देंगे. Madhavacharya said, "I'm a sannyasi, I don't want anything. But of course, if you're coming from Dwarka, if you have got tilak, you can give me, because tilak I used." तो वे कहे कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे धन की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि आप द्वारका से आए हैं, तो आप मुझे द्वारका का जो तिलक है वो मुझे आप दे सकते हैं, ताकि मैं उसको उपयोग कर सकूं. And what happened? The ship, to keep the ship balanced, they put big chunks of mud, you know, and they have picked it up from the Gopikund? Gopitala, yes. तो जो नाव होती है, नाव का संतुलन बनाने के लिए कुछ मिट्टी भी डाली जाती है. तो इन जो भी कैप्टन उनके जो लोग थे नाव के, उन्होंने गोपी तालाब का जो मिट्टी थी, तिलक था, उसको डाला था उस नाव में, संतुलन बनाए रखने के लिए नाव का. And the captain said, "Okay, we'll give you that." And then they took these chunks of soil, earth, and put it outside. तो फिर जो नाव के जो कैप्टन थे उन्होंने हाँ बोल दिया, और जितना भी वहाँ पर वो तिलक था या फिर मिट्टी के रूप में जो उन्होंने लाया था वो उन्होंने उनको दे दिया. And when it was put outside, it broke open, and then they saw beautiful deity of Gopal, Haribo. तो जैसे उन्होंने वो मिट्टी नाव के बाहर निकाली, तो फूट कर देखा कि अंदर उसमें गोपाल जी का बहुत सुंदर विग्रह उनको मिला. It's explained that about 30 of them, followers, disciples, trying to pick up the deity to bring it to the temple, they could not. So he himself, Madhavacharya, alone, he just picked it up and then took it to the तो पहले temple. तो उनके 30 शिष्यों ने प्रयास किया उस विग्रह को उठाने का, लेकिन कोई उठा नहीं पाया. तो अंततः मध्वाचार्य ने अपने हाथों में गोपाल जी के विग्रह को उठाया और लेकर आए. So you can have this deity, darshan of this deity still there in the Madhavacharya's mat. आज भी उन विग्रहों का दर्शन आज भी मिल सकता है मध्वाचार्य के मठ में. He's standing, black color of course, and with a stick. तो ये जो गोपाल जी का विग्रह है, ये काले स्वरूप में है और साथ में उनके हाथ में एक काठी हुई है. Anybody had darshan of this deity? आपने इस विग्रह का दर्शन लिया है उडुपी के कृष्ण? You also? Oh, you've been there? I've been there once, 1992. That's the first time I went. मैं 1992 में पहली बार उडुपी का दर्शन करने गया था. That's beautiful. That's the place where they have darshan from the. Is it? Is it the same deity? No? Darshan from window. ये वही मंदिर है जहाँ से खिड़की से दर्शन लेना पड़ता है भगवान. 10. Because there was their follower, disciple, his name was Kanaka Swami. तो श्री मध्वाचार्य के एक शिष्य थे कनकदास, उनके लिए भगवान घूम गए थे, तो इसलिए आज भी उनका दर्शन जो है खिड़की से लेना पड़ता है. Yeah, he was not allowed to have darshan from the door, and because he is not from a Brahmanical family, so he was not allowed. So then he went to the window side to have darshan, and then the Lord like this, and then he turned to the window, and he was able to have darshan from the window. क्योंकि कनकदास ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, इसलिए उनको मंदिर के अंदर प्रमुख द्वार से प्रवेश लेना उनको अनुमति नहीं थी उनको. इसलिए भगवान तो जब खिड़की से देखना चाहते थे तो उनको दर्शन देने के लिए भगवान घूम गए. तो इसलिए आज भी वहाँ खिड़की से दर्शन लिया जाता है उडुपी कृष्ण. Because we are all considered Sudras now, Kalo Sudra Sambhava, so that's why everybody has to have darshan from the window. तो कलयुग में सभी क्षुद्र ही है, तो
तो हम भी शूद्र की एक श्रेणी में ही आते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि कलयुग में सभी को अभी वो खिड़की से दर्शन लेना पड़ रहा है। It's very beautiful deity. तो एक अत्यंत सुंदर विग्रह है। And this deity actually coming from where? Because this deity was given, Rukmini wanted to see. I think it was Devaki. Devaki gave birth to Krishna, but he never enjoyed the childhood of Krishna. तो ये जो विग्रह है, ये देवकी माता जब कृष्ण को हालांकि जन्म तो दी थी, लेकिन कृष्ण को मिल नहीं पाई थी, और कृष्ण के जितने भी बाल लीलाएं हैं या बाल स्वरूप में वो कृष्ण के साथ कोई आदान प्रदान नहीं कर पाई थी। She said, Krishna, I gave you birth, but I did not see your childhood pastime. I want to see your form. And Krishna manifested that form of Gopal in front of Devaki. And Rukmini was there. Rukmini was attracted. Oh, I want this. तो कृष्ण जब देवकी माता से मिले तो देवकी माता कही कि हे कृष्ण, हालांकि मैंने आपको जन्म तो दिया है, लेकिन आपके जो बाल स्वरूप है आपका, या फिर आपके बाल लीलाओं का मैं आनंद नहीं ले पाई हूँ, इसलिए भगवान ने उस विग्रह को प्रकट किया है, और इस सुंदर विग्रह को देखकर रुक्मिणी माता भी बहुत आकर्षित हुई। And that was given to Rukmini. Rukmini was worshipping, but when Krishna left and there was pralay, inundation covering the whole Dwarka, and that's how this deity was found in the Gopi Talab. तो रुक्मिणी माता इन विग्रहों की आराधना करती थी, उडुपी कृष्ण के जो विग्रह है, लेकिन बाद में जब कृष्ण इस धराधाम से अप्रकट हुए और फिर एक प्रलय जब आया द्वारका में, तो तब ये जो विग्रह है गोपी तालाब में थे, और फिर वहां से इनको इधर उडुपी क्षेत्र में लाया गया। So our sampradaya is also Madhva Gaudiya Sampradaya, Brahma, Madhva Gaudiya, Vaishnava Sampradaya. तो हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। In fact, Madhavacharya has also instructions, very beautiful, he's given 9 instructions in his teaching. तो श्री मध्वाचार्य अपनी शिक्षाओं में प्रमुख 9 शिक्षाएं दी हैं। 9 of them. तो उसमें 9 प्रमुख हैं। Very similar to our sampradaya also. तो हमारे संप्रदाय से एकदम मिला-जुला है। Krishna is the absolute. कृष्ण ये पूर्ण है, पुरुषोत्तम है। This is the teachings of Madhavacharya. तो ये मध्वाचार्य की प्रथम शिक्षा है, कृष्ण पूर्ण है। And Krishna is object is actually the object of knowledge from the Vedas. तो वेद के अनुसार जो ज्ञान का जो उद्देश्य है वो कृष्ण ही है। Right? We also preaching that, right? Vedashya sarver aham eva Vedya. तो इस सिद्धांत का भी प्रचार कर रहे थे श्री मध्वाचार्य। This universe is Satya. ये जो जगत है ये सत्य है। Right? Is that right? ऐसे ही But Mayavadi what they say? Brahman Satya? मायावादी कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है, भगवान जीव है, वो सत्य है, लेकिन जगत मिथ्या है। ये मायावादियों का तत्व है। And he's also preaching there is a different between God, Jiva and material nature. Is that true? और दूसरी शिक्षा बोल रहे हैं कि प्रकृति और जीव में भेद है, क्या ये सही है? Yes. Right. Material nature also. And the soul, the 5th one is soul is the servant of God. पांचवा है कि जो आत्मा है वो भगवान का दास है। Is that correct? क्या सही है? Yes. And he's saying that liberation means attaining the lotus feet of the Lord. तो आगे की शिक्षा, छठवीं शिक्षा बता रहे कि मुक्ति मतलब भगवान को प्राप्त करना। Is that right? Mayavadis means liberation means what? Merging in the Brahma Jyoti, right?
मायावादी का तत्व ज्ञान बताता है कि मुक्ति अर्थात भगवान में एकाकार हो जाना. And now the eighth one is only pure devotion is a way for liberation. और आठवीं शिक्षा बता रहे हैं कि केवल शुद्ध भक्ति है भगवान की, वही भगवान को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है. Is that correct? Yes. Yes. I mean, liberation here doesn't mean merging. Liberation here means attaining. He was propagating that. He said liberation means attaining the lotus feet of the Supreme Lord in Golokdham. That's the meaning of liberation. But Mayavadi's meanings of liberation means to merge into the Brahmajyoti. तो इनकी ये जो अंतिम शिक्षा है कि मुक्ति का अर्थ भगवान में एकाकार होना नहीं है, मुक्ति का अर्थ ये है कि भगवान के चरणों को प्राप्त करना. There's a ninth one, but I could not get it. There's ninth altogether, anyway. नौवीं शिक्षा है वो भी नहीं है. So, huh? There's also differences between our sampradaya and their differences. Like for example, but it's not big differences. Their worship is Lakshmi Narayan. But for us sampradaya it is Radha and Krishna. And this also speak of Vaikuntha mostly, but ISKCON speaks of Golokdham. तो श्री मध्वाचार्य के समय लक्ष्मी नारायण की पूजा प्रमुख थी और वे वैकुंठ के बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्रमुख है और हम गोलोक वृंदावन के बारे में चर्चा करते हैं. And at the end, Madhavacharya would also encourage, he would teach, and especially at the end of his, almost the end of his life, he would spend his time in worshipping and preaching. तो श्री मध्वाचार्य अपने जीवन का जो अंतिम समय है, वो भगवान की विग्रह की आराधना और प्रचार में व्यतीत की. And he would ask his followers not to just sit down. He would ask them to go out and preach. वे अपने अनुयायियों को बोलते थे कि एक जगह बैठे मत रहो, बाहर जाओ और प्रचार करो. So this is how the story of Madhavacharya unfolds. Very powerful preacher. तो ये श्री मध्वाचार्य की कथा है, जो अत्यंत शक्तिशाली प्रचारक हुए. Defeating many Mayavadis. In his spiritual Leela, he is Madhavi Gopi. तो इस प्रकार उन्होंने कई सारे मायावादियों को भी परास्त किया और वे भगवान की नित्य लीला में वो माधवी गोपी जो उनका मूल स्वरूप है. And is also very much into teachings of the Guru Padasraya, taking shelter of spiritual master. और इन्होंने गुरु पादाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय लेने में इन्होंने बहुत जोर दिया है. Some of the Madhva followers, they don't agree that we belong to, ISKCON belongs to Madhavacharya Sampradaya. तो श्री मध्वाचार्य के जो अनुयायी हैं, वे कुछ उनमें से ये मानते नहीं हैं कि ISKCON मतलब मध्व संप्रदाय में आता है. Because Baladev Vidyabhushan, he wrote commentary on the Vedanta Sutra. So if we belong to Madhavacharya, why then Baladev Vidyabhushan has written commentary when Madhavacharya had already written? तो कुछ श्री मध्वाचार्य के जो अनुयायी हैं, वो मतलब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को मध्व संप्रदाय में नहीं मानते, क्योंकि वो पूछते हैं कि अगर आप मध्व संप्रदाय में अगर हैं और मध्वाचार्य ने पहले ही वेदांत सूत्र के ऊपर अपना तात्पर्य लिखा है, टीका लिखी है, व्याख्या लिखी है, तो फिर आपके जो आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने क्यों अलग से व्याख्या लिखी है वेदांत सूत्र के ऊपर? You understand the point? क्या आप समझ गए?
So the answer was because at that time the Ramanandi, there are also different branches, Tadvavadis and the Ramanandis. They were challenging the king of Jaipur that you cannot put Radha Krishna together because they are not married. तो कई सारे जो लोग थे वे जयपुर के राजा को आह्वान दे रहे थे Ramanandis. रामानंदी क्षमा कीजिए वो कह रहे थे कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है इसलिए आप उनको एक साथ उनकी पूजा नहीं कर सकते आप एक साथ राधा कृष्ण को रख नहीं सकते हैं So then the king, what to do now? Then he called out Vishwanath Chakravarti Thakur, who was in Vrindavan that time. तो उस समय फिर राजा ने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को बुलाया जब वे वृंदावन में थे But Vishwanath Chakravarti Thakur was old, he could not come. And then he sent Baladev with devotion. तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय अत्यंत वृद्ध थे इसलिए उन्होंने अपने शिष्य श्री बलदेव विद्याभूषण को भेजा So Baladev Vidyabhushan went there तो बलदेव विद्याभूषण वहाँ गए and he defeated the Ramanandis. और उन्होंने रामानंदियों को परास्त किया And the condition was, if you are defeated, you have to come and surrender to the person who defeated you. और ये शर्त थी कि जो जिसको परास्त करेगा उसके शरण में परास्तों को आना पड़ेगा But Baladev Vidyabhushan said, no, because I respect your sampradayas, Madhavacharya or Sri Sampradaya maybe. They are also bona fide. I will not reinitiate you. I respect it. Although you have been defeated by me, I respect it. I will not reinitiate. हालांकि यहाँ पर श्रीमद बलदेव विद्याभूषण का एक भाव था हालांकि उन्होंने परास्त तो किया जो भी रामानंदी थे वे अलग अलग जो भी अलग अलग संप्रदाय के थे तो वे कहे कि हालांकि मैंने आपको परास्त किया है और ये शर्त भी थी कि अगर जो जिसको परास्त करेगा परास्त हुए जो भी परास्त होंगे वो शरण ले लेंगे जो परास्त करेंगे उनको लेकिन तो बोल रहे थे श्री बलदेव विद्याभूषण कहे कि मैं क्योंकि आपके संप्रदाय का मैं सम्मान करता हूँ आपका भी प्रामाणिक संप्रदाय है इसलिए मैं आपको फिर से मैं दीक्षा नहीं दूंगा And the Ramanandi said, okay, fine, but one is considered bona fide when he writes commentary on we have to have the commentary on the Vedanta, then you're bona fide. There is no commentary in our line. तो सभी जो रामानंदी थे और जितने भी जो वाद विवाद कर रहे थे वे कहे ठीक है लेकिन फिर भी आपको वेदांत सूत्र के ऊपर अपनी अलग से व्याख्या लिखनी पड़ेगी तभी जाकर आप प्रामाणिक हो ये सिद्ध हो जाएगा Give me a few days. तो उन्होंने कुछ दिन मांगे And in a few days he wrote the Govinda Bhashya. तो फिर अपना गोविंद भाष्य नामक उन्होंने व्याख्या लिखी वेदांत सूत्र के ऊपर श्री बलदेव विद्याभूषण ने Inspired by Govinda Dev of Jaipur. जयपुर के जो गोविंद जी हैं गोविंद देव उनके द्वारा ही प्रेरित थी And the Ramanandis, they were shocked. Wow, just in a few days he was able to write a commentary. और वे जितने भी रामानंदी थे वे आश्चर्यचकित हुए कि इतने कम दिनों में आपने इतना सुंदर व्याख्या कैसे लिखी So the Madhavacharya claiming that why if we belong to Madhavacharya, why was the need for Baladev Vidyabhushan to write a commentary? But why? Because it was needed at the time. It was challenging. It was challenged, so he had to write. तो जिस प्रकार मानव संप्रदाय के कुछ शिष्य हमें बोलते हैं कि अगर आप हमारे संप्रदाय से ही हैं तो फिर आपने अलग से वेदांत सूत्र के ऊपर क्यों व्याख्या लिखी बलदेव विद्याभूषण ने तो यहाँ पर उसका उत्तर है कि ये जो भी हुआ उस समय वैसे जरूरत थी कुछ लोग आक्षेप ले रहे थे इसलिए उनका जो संशय दूर करने के लिए या फिर उनके जो वाद है उसको परास्त करने के लिए भी उनको व्याख्या लिखनी पड़ी Radhanath Swami Maharaj used to go there, and he is in very good terms, very good relationship with them. राधानाथ महाराज वहाँ कई बार जाते थे बैठते थे और उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाए थे But if nowadays Madhavacharya's glories have been spread all over the world, it is due to
Prabhupada ki. तो आज भी सारे विश्व भर विश्व मध्वाचार्य की जो भी महिमा फैली हुई है वो केवल श्रील प्रभुपाद की वजह से है। Yes, his books written, now spread all over the world. It's Prabhupada's work. तो ये श्रील प्रभुपाद के कार्य सेवा का परिणाम है। And it is said that, I don't know if it is true, it is said that Madhavacharya has lit the light, which is still burning there in the temple. It's been non-stop. It was lit by Madhavacharya. तो ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं सही है कि नहीं, महाराज कह रहे हैं कि आज भी श्री मध्वाचार्य ने जो दीप जलाया है वो आज भी जल रहा है, ऐसा कहते हैं। Madhavacharya ki, Sri Prabhupada ki. Koi prashna? Yes. I heard something that Madhavacharya they consider Lord Vishnu is the source of all incarnations. Is it true? I don't know. And we consider the Lord Krishna as the Lord. Yeah, I said already. प्रश्न ये है कि मध्वाचार्य के जो अनुयायी वो समझते हैं कि विष्णु ही सभी अवतारों के स्रोत है, कितना सही। Yeah, differences also. A similarity also, differences. तो कुछ भेद भी है, कुछ अभेद भी है इस संप्रदाय में। They consider Vishnu to be the source of all incarnation. वे विष्णु को ही सभी अवतारों के स्रोत मानते हैं। And they consider all equal. और वे सभी को समान मानते हैं। But in our case, we consider Radha Krishna is a source. लेकिन हमारे संप्रदाय में हम श्री राधा कृष्ण को सभी अवतारों के स्रोत मानते हैं। And even in our sampradaya, we make differences among the avatar. But this is not big difference. It is due to rasa. तो लेकिन हमारे संप्रदाय में हम जो अलग-अलग अवतारों में जो भेद करते हैं, वो भेद रस के ऊपर आधारित है। Like Rupa Goswami is saying, higher than Vaikuntha is Mathura. Higher than Mathura is Vrindavan. Higher than Vrindavan is Govardhan. Higher than Vrindavan is Govardhan is. Why the differences? It's all according to rasa. तो हमारे गोस्वामीगण कहते हैं कि वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरापुरी है और मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है और उसमें भी गोवर्धन श्रेष्ठ है, उसमें भी श्री राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। तो ये रस के ऊपर आधारित श्रेष्ठता है। But in this sampradaya we say no, they are all equal. लेकिन मध्व संप्रदाय में वे सभी को समान मानते हैं। So it's okay, but it's just question of rasa. लेकिन एक रस का प्रश्न है। We make difference. All the incarnation, they are Vaikuntha. Even Ayodhya also is within Vaikuntha. तो वे मानते हैं कि सभी जितने भी अवतार हैं वो वैकुंठ में रहते हैं। वे मानते हैं कि अयोध्या भी वैकुंठ का ही भाग है, वैकुंठ नहीं है। But Golok Dham is topmost planet. लेकिन जो गोलोक धाम है वो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थान है। So there is some differences also. तो इस प्रकार कुछ भेद है। But they are called Vaishnavas. लेकिन उनको भी वैष्णव कहा जाता है। Did they consider Lord Chaitanya Mahaprabhu as Chaitanya Mahaprabhu? pretty much encouraged? See, our sampradaya is Madhva Sampradaya, but Bengali branch. Ours is Madhva Sampradaya, but yeah, Bengali branch, Gaudiya. तो प्रश्न ये है कि क्या वे चैतन्य महाप्रभु को भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं क्या? तो महाराज कह रहे हैं कि हाँ, हम भी मध्व संप्रदाय में हैं, लेकिन हम बंगाल के ब्रांच में हैं। So why it is exalted? Because of the appearance of Sri Chaitanya. This is unique. In all the four sampradayas, this one is unique because of the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. तो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। ये सभी संप्रदायों में से विशेष भेद है। ये मतलब विशेषता इस गौड़ी संप्रदाय की, क्योंकि बाकी किसी चार संप्रदायों में चैतन्य महाप्रभु नहीं आए हैं। I heard Bhakti Swami Maharaj said once, he said,
All the other sampradaya, the destination will be Vaikuntha. तो Because of Mahaprabhu's appearance in our sampradaya, destination is Mulugadham King. तो भक्ति स्वरूप महाराज वो बता रहे थे, मैंने उनसे सुना कि जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं उनका जो गंतव्य है वो वैकुंठ है, लेकिन हमारे संप्रदाय में क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, इसलिए हमारा जो गंतव्य स्थान है वो गोलोक वृंदावन है. Because Mahaprabhu who has come to reveal these Madhurya Rasa as a topmost, क्योंकि Sakya, Vatsalya and Madhurya. That was revealed first by Madhavacharya Puri. He's opened that first, and that Mahaprabhu came and spread that. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही माधुर्य रस को प्रकट किया हमारे संप्रदाय में. तो श्री माधवेंद्र पुरी इन्होंने पहले साख्य वात्सल्य दास इसको पहले प्रकट किया था, लेकिन उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य रस को प्रकट किया. Any other question? So his question was that do they accept that Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu? They may not accept because I was saying already that Mahaprabhu has come. This is Gupta Chanavtar had come. So that's come in Bengal. So, but this is uniqueness because Mahaprabhu had appeared in our sampradaya. तो ऐसा हो सकता है कि वे स्वीकार ना करें कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये भगवान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ही हमारे संप्रदाय में बंगाल में प्रकट हुए, तो ऐसा हो सकता है कि ये ला सकते. Right. But because it is given in Shastra and other acharyas they are accepting. Sorry? Because Sri Chaitanya Mahaprabhu's appearance, Yeah. his symptoms are given in many scriptures, many Puranas, Yeah. Bhagavatam. Why they are not accepting? It is clear. Even though it is Chadma Avatar, Yeah. Avatar, but when it is clear and other acharyas they are also accepting. So Yes, why they definitely. are not accepting? You know, it's there also like we find Vallabhacharya, Sampradaya, Pushti Marg. They don't accept Mahaprabhu as Mahaprabhu, they accept Vallabhacharya as Mahaprabhu. Right? Where they also come from our line, because the Guru is from Gadadhar Pandit, I think. Yeah. But they don't accept, so just that's their way. They don't want to accept. You know, many people don't accept also. तो मेरा प्रश्न यही था कि जब चैतन्य महाप्रभु का जो प्रकट अवतार है उसका वर्णन सभी शास्त्रों में है और कई सारे आचार्य मानते हैं, इसमें कोई वैसा भेद नहीं है, फिर भी मध्व संप्रदाय के में क्यों उनको स्वीकार नहीं करते. तो कह रहे हैं कि वल्लभाचार्य जो संप्रदाय है वे लोग भी चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु नहीं मानते, वल्लभाचार्य को ही महाप्रभु मानते हैं. तो ये हो सकता है. Yeah, then fortunate. क्योंकि Yes. गदाधर पंडित जो वल्लभाचार्य संप्रदाय भी गदाधर पंडित के शाखा से आया है, लेकिन फिर भी वे नहीं मानते. Maharaj, there is, I heard that there is interaction between Lord Chaitanya and four acharyas of four sampradaya. Means Lord Chaitanya gave his darshan to Ramanujacharya also, but he said that your disciples are in the mood of Vaikuntha, but you can relish because you are my eternal servant. So I have that there is interaction between Lord Chaitanya with all four acharyas. That's true? Yes. तो चार प्रमुख संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया, उनसे संवाद किया. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहे कि आपके जितने भी अनुयायी हैं वो वैकुंठ का तक ही जाएंगे, लेकिन क्योंकि आप मेरे शाश्वत सेवक हो इसलिए आप उस रस का, गोलोक वृंदावन के रस का ये कर सकते हैं. तो क्या ये सही है कि चार संप्रदाय के आचार्यों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने संवाद किया, उनको दर्शन दिया है? तो महाराज कह रहे हैं I don't have the detail, but I know when we do parikrama, Navadvip parikrama, there is a place where the acharya, the devotee, the sannyasi, they speak about this pastime of this lila of
of all the Acharya, these four sampradayas, they have met Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes, मैंने that's वैसे true. देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि नवदीप मंडल परिक्रमा में ऐसा एक स्थान है जहाँ पर चारों संप्रदाय के आचार्य इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया है. So this Madhurya Rasa and all the rasa has been propagated by Sri Chaitanya Mahaprabhu, is the highest rasa. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य रस का जो प्रचार किया है सर्वश्रेष्ठ रस है. Although we also worship Radha Krishna in the mood of Lakshmi Narayan, that's true. तो ये भी सत्य है कि हम भी राधा कृष्ण की सेवा लक्ष्मी नारायण के रूप में ही करते हैं. We do sadhana bhakti हम भी साधना भक्ति करते हैं. and we worship with one reverence. हम भी अत्यंत आदर पूर्वक हम भी पूजा करते हैं राधा कृष्ण की. But because we're chanting Hare Krishna, so all the rasa, Hare Krishna Mahamantra is an embodiment of all the rasa. और क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र ये सभी रसों का मूर्तिमंत स्वरूप है. This is unique. तो ये विशेष है. Okay, thank you. So any other points or question? We'll stop here otherwise. तो प्रश्न है नहीं तो फिर भूल जाए. Yeah, last one. Go to Vrindavan right now. This Radha Sundar Mandir, where you will find the deities of Srila Baladev Vijayavishnu. There they have clearly written that five sampradayas are there because Madhava and Gauda they are separated. Yeah. Because of Madhavacharya, after Madhavacharya come, we are totally our mood is become changed from Madhavacharya. So how to reconcile them? Have to Reconcile. reconcile. I could not get the first point you made. The Radha Sundar Mandir, if you go, they have written in their board five sampradayas there. They have written the book also. Five sampradaya. Sri and Rudra, Katha Kumar, and then in Madhava and Gauri. Total five sampradayas. They are separating Madhava and Gauri. Because Madhava. Yeah, Mahaprabhu has made his own sampradaya also. Yeah. The track is changed from there. Madhva to? Madhavendra Puri. Yeah. From Madhavendra Puri, this sampradaya is getting separated. Gaudiya Vaishnava sampradaya. Oh, their sampradaya. So previously it were four, but from Madhavendra Puri the mood got changed. Yeah. So now the fifth sampradaya got introduced. Gaudiya is fifth sampradaya, they are saying. It is written in that temple. Gaudiya is the fifth. Yeah. Our sampradaya is the fifth. So how to reconcile this? Yes, because means Mahaprabhu has taken, what he has done, he has taken two principles from each sampradaya, right? He has taken two principles from what's called Sri Sampradaya. What is the principle he has taken from Sri Sampradaya? Deity worship and Vaishnava? So, No, deity worship from Madhava Sampradaya. which one is taken? He's a this is a Vaishnava Seva and the Bhakti without Gyan Karma. Gyan, like that. Yeah, could be. That is from Sri Sampradaya. Devotion and And Vaishnava Seva. Yes, it's two principles, yeah. He's taken two principles from each? Sri Sampradaya. Yeah, from Sri Sampradaya. And made his own Sampradaya. तो इस प्रकार तो प्रश्न ये है कि हम वृंदावन में जब राधा गोपीनाथ मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर कोई बोर्ड में लिखा है कि चार संप्रदाय थे, फिर माधवेंद्रपुरी की वजह से ये पांचवा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय स्थापित हुआ. तो महाराज बता रहे हैं कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने पांचवा संप्रदाय स्थापित किया, क्योंकि चारों संप्रदाय से दो शिक्षाएं महाप्रभु ने इस पांचवें संप्रदाय को मतलब हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को बनाने में ली है. तो श्री संप्रदाय से भगवान की भक्ति बिना ज्ञान कर्म से प्रभावित हुए करना एक शिक्षा ली है श्री संप्रदाय से और वैष्णव सेवा. तो अलग अलग संप्रदाय से अलग अलग शिक्षाएं ली है दो. Because before the worship was Lakshmi Narayan, Vishnu. But when Manpa Sampradaya came, then he had revealed that worship of Radha and Krishna, which is the highest. लक्ष्मी नारायण की सेवा
होती थी, लेकिन बाद में माधवेंद्र पुरी आने से फिर ये भाव जो है बदल गया, फिर इसमें राधा कृष्ण की सेवा ये मतलब बताइए। Sorry? Yeah. From there, Mahaprabhu took the mood of Gopis to worship the Lord. Gopi worship, yeah. So I think they are worshipping the Radha Krishna or they are worshipping the same Krishna? I wouldn't know much about Nimbanka Sampradaya. Nimbanka, this is of Chatuskumar? No. Right? This Banka Bihari? Which Sampradaya is it? You see, we don't chant Banka Bihari much, right? Jaya Radha Banka Bihari. It's purified, yes, but this is not Gaudiya. This is the Banka Bihari belongs to Haridas Swami, but which Sampradaya? Yeah, Kumara Sampradaya. Banka Bihari belongs to Kumara Sampradaya. Yes. You see, we don't chant because the deity doesn't belong to the Goswamis. तो बांके बिहारी जी वृंदावन के वो कुमार संप्रदाय से संबंधित है, स्वामी हरिदास जी के विग्रह है, तो वे हमारे संप्रदाय में नहीं आते, इसलिए उनका नाम नहीं देते। Okay, thank you. Hari Bol. Prabhupada ki, Madhavacharya ki, Vijayadasami ki, Nitai Gaur Bhimanande. परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज की। तो महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विशेष विजयादशमी दशहरा के तिथि के हमारे प्रमुख आचार्य परंपरा के माधवाचार्य का आज प्राकट्य दिवस के